So let us begin with this topic. The today's topic name is population forecasting. Right. What are the factors affecting change in population? मतलब ऐसे क्या factors हैं जिसकी वजह से हमारा population मतलब change होता रहता है? These are like if there is an increase due to birth, that will be one factor. Second, decrease due to the death. The third one will be increase or decrease due to the migration. Or fourth one will be increase due to annexation. Okay. So what are the various methods available for the population forecasting? So basically, there are 9 various methods which are available for population forecasting, and those methods are like arithmetic increase method, geometrical increase method, incremental increase method, decrease rate of growth of method, simple graphical methods, then a graphical comparison method, then master plan method or zoning method. Next is appointment method, and last one is a logistic curve method. All differ with each and every one. Okay, so let us see one by one. We'll take from arithmetic and increase method. So this is a very simplest method, and which is widely used across the world, just because of the simplicity of the formulas and all. Okay, but there are typical some points for which we have to use this method. Okay, so this is the method is based on the assumption. What is the assumption? The assumption is that the rate of change of population with time is also constant. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे अगर हम 10 साल यानी एक डिकेड की बात करते हैं, तो से सपोज करो कि 99 से 2009 तक के से सपोज करो कि 5% इंक्रीज हुआ, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में कि 2009 से 2019 तक भी वो वही रेट ऑफ जो इंक्रीमेंट है वही रहेगा. जैसे आपका 99 से 2009 तक के 5% आपका इंक्रीज हुआ, तो हम आगे भी जब फोरकास्टिंग करेंगे तो हम उसमें यही अजम्पशन कर रहे हैं कि आगे भी वो 5% से इंक्रीज करेगा. ओके, सो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. सो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अ लार्ज एंड ओल्ड सिटी विद कंसिडरेबल डेवलपमेंट. क्या होता है कि जैसे कोई नया शहर बसा या नया सिटी अगर स्टैब्लिश हो रहा है या नया टाउन अगर अंडर डेवलपिंग कंट्री में, तो यू कैन सी द माइग्रेशन कैन बी मोर देयर, क्योंकि उसको ऑक्यूपाई करना है. ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसी है, एरिया वैकेंसी है, उस एरिया वैकेंसी को आपको फिलअप करना है. तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके स्टैब्लिश होना शुरू करेंगे, वो आने के लिए वहाँ का डोमिसाइल लेने शुरू करेंगे, रेसिडेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक सडन ग्रोथ बन जाता है. बट दिस मेथड वेर यू विल यूज दिस मेथड विल बी यूज फॉर द ओल्ड सिटीज, यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी आपका पब्लिक है और जहाँ पे बहुत रेयर मार्जिन से आपका जो डेवलपमेंट इंक्रीज, आपका जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो हम ऐसी जगह पे इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं. ओके, कहने का मतलब है कि ओल्ड सिटी अगर आपका है, उसके अगर आपको फर्दर कैलकुलेशन करना है, तो देन यू कैन डू दैट. Okay, with a considerable developments. If it is used for a small, average or a comparatively new cities, it will give a lower population estimate than that actual value. Just I have taken an example just a minute back कि आपका अगर छोटा सिटी है, जैसे हम पालका सिटी में, जैसे हमारा छोटा सिटी है, लेकिन जैसे ये डिस्ट्रिक्ट बना तो यहाँ पे देखिए आपका डेवलपमेंट बढ़ गया. यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ गया मतलब यहाँ पे लोग माइग्रेट होके इस पालका सिटी में आ गए, तो ऑल सडन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मतलब पॉपुलेशन उसका साइज बढ़ गया. सो दैट इज हैपनिंग. तो ऐसी जगह पे हम ये अगर ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, सो इट विल गिव यू अ फॉल्स रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ नहीं हुआ, इट इज अ डायनामिक ग्रोथ. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. In this method, the average increase in population per decade is calculated from the past census report. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें अगर हमारे फ्यूचर का अगर फोरकास्टिंग करना है, तो मिनिमम आपको लास्ट 3 इयर्स का डिकेड का इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर हमने शुरू किया 1960 से 1970 का डेटा हमारे पास होना चाहिए, देन 1970 से 1980 का डेटा होना चाहिए, देन 1990 का होना चाहिए. मतलब हर आपको एक डिकेड्स में है ना, हर 10 साल में आपका जो सेंसस रीडिंग होता है वो बाय गवर्नमेंट, दैट शुड बी हैपन एवरी डिकेड्स. ओके,
this increased in the added to the present population to find out the population for the next decade. उसी के बेसिस में हम आगे आने वाले डिकेड्स के बारे में हम population को forecast कर सकते हैं. It is assumed that the population is increasing at a constant rate. Yes, in the first point only we have cleared this कि आपका ये जो rate है this is very constant. से suppose 5% से होते आया है तो हम आगे भी future forecasting क्या कर रहे हैं कि आगे भी वो 5% के साथ में increase करता रहेगा. Okay, which is very rare. The formula which is used is like Pn is equals to P plus N multiplied by C. So where Pn is the population after n decades. Pn is a population after n decades. We are talking about this. Okay. So P is the latest known population. जो भी at present आपका population होगा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. P is the latest known population. Where C is the average increase in population per decade. Now let me clear this. Somewhere it is C, somewhere it is I. कई सारे बुक्स में I से रेफर कर रहा है, कई सारे बुक्स में C से रेफर कर रहा है. So no need of worry for this. आप C लिखोगे तो भी चलेगा, I लिखोगे तो भी चलेगा. Okay. So let us take an example of this. So I am having a set of data. Set of data says it is a year in this column, and here it is a population. Say 1940 में population था आपका 8,000. 1950 में आपका population था 12,000. 1960 में हमारा population था 17,000. 1970 में population रहा 22,500. So the question is like you have to calculate the probable population in the year of 1980, 1990 and 2000. यानी कि इसके आगे 3 साल का आपको population forecasting करना है. So how you will do? Again put the same column in the same way. Year 1940 से 1970 तक के. Again put the population. Again put the population in the same fashion which is given in a question. Now here you have to check the increase in population. Okay. So how you will check the increase in population? Just see this. In 1940 it is 8,000. 1950 it is a 12,000. Now 12,000 minus 8,000. How much it will be? It will be 4,000. Just put 4,000. Now again further if we go, in 1950 it is 12,000. In 1960 it is a 17,000. So now what we have done, we'll do like increase in population. कितना increase हो रहा है 50 से 60 में? This is 17,000 minus 12,000. So it will give you a 5,000, right? Same way, similarly, if you do like 22,500 minus 17,000, so this will give you the value 5,500. A very simple formula and simple calculations. Okay, so you are getting here increase in population. This is your increase in population. यानी 1914 से 1950 में कितना आपका डेवलप मतलब कितना आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है 4,000. So like ये हमने ये हर साल का निकाल लिया. Then what you do, you just total it, you just sum up it. That will be 14,500. Okay. Now you have to take an average. ये 14,500 मतलब इन सब का हमको एवरेज लेना है. So what you will do, you will divide by 3. ये वैल्यू जो है इसको डिवाइड बाय 3 कर दो. 14,500 डिवाइड बाय 3. So it will give you a 4,833. What we are trying to say, an average value हमने निकाला 1940 से 1970 का, तो हम कह रहे हैं कि 4,833 आपका 33 इतना पॉपुलेशन आपका इंक्रीज हर साल हो रहा है एन एवरेज औसतन. Okay, so now let us go forward by using this formula. Formula is Pn is equals to P plus NC. Using this formula, what we will write? This is Pn is equals to Pn for 1980. We are calculating Pn is equals to for 1980. So what it says, Pn is equals to P. What is P? Population after n decades. So what is the population? In 1970 we can see that is 22,500. So just keep it 22,500 plus. अब आप देखो ये जो रहे plus 1 into 4833. This is your average. And what is n? N is the decade. N is the decade.
10 साल के जो एक बंच बनेगा उसको हम बोलते हैं डिकेड. तो N stands for decades. So by calculation of this, you can get 27,333. I repeat, that will be 27,333. अभी देखिए 1970 में 22,500 था. अभी इसी एवरेज की रेट्स अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका 1980 में कितना हो जाएगा? That will be your 27,333. Now I have to further calculate for 1990. So 1990 में क्या हो जाएगा? आपका जो P रहेगा population, this value, now this value will be of what? That will be the value of 1980. इसका जो वैल्यू होगा 27,333 प्लस फिर से एक डिकेड हमने बढ़ाया इसलिए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या एवरेज से बढ़ रहा है आपका 4,833. So that will come 32,166. Now similarly we'll go for this 2000 population for 2000 कितना होगा? अब इसके लिए जो प्रीवियस जो डेटा होगा जो प्रीवियस आपका population होगा that will be of 1990, that is 32,166 plus same decade का वैल्यू एक डिकेड से हम बढ़ रहे हैं, so that's why it is 1 multiply by again the average of this, that will be 4833. So this will give you 36,999. So this is the very simplest way to calculate the population forecasting in arithmetical increase method. We have to just use this method, this formula, but before using this formula you have to just find out the increase in population कितना हो रहा है, an average value आपको निकालना है. ठीक है? So let us move further for a geometrical increase or progression method. So in this method the percentage increase in population from decade to decade is assumed to remain constant. अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे देखिए 4,833 इतना ये बढ़ रहा है, बट हियर वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज. यहाँ पे वो वैल्यू के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे आपका परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज से बढ़ेगा. So geometric mean increase is used to find out the future increment in population. Whatever the method we are taking today, all are for the future increment in population. Okay. Since this method give a higher value and hence should be applied for a new industrial town at the beginning of the development of a few decades. आप देखिए कोई भी नया सिटी या नया टाउन या नया मेट्रो कोई भी अगर नया कुछ डिजाइन हो रहा होगा, नया डेवलपमेंट अगर हो रहा होगा, न्यू स्टैब्लिशमेंट अगर हो रहा होगा, तो आप ये फॉर्मूले को यूज करेंगे. अगर आप सेम पिछला वाला फॉर्मूला ही अगर आप यूज करोगे अरिथमेटिक इंक्रीज, दैट विल गिव यू अ फॉल्स रीडिंग. When we take a few numericals in next lecture, then you will might be understand what is increasing, what rapidly the values are changing, right? So the population at the end of the nth decade, Pn can be estimated as, now again Pn is the future population, so forecasting population. उसके लिए formula दिया हुआ है P multiplied by 1 plus Ig divided by 100 multiplied by n, where Ig, this Ig is a geometric mean. It will be in percentage. Okay, P is a present population. P is a present population, and is the number of decades. So if you see this carefully, so data I have kept same. थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो इसीलिए मैंने डेटा सेम रखा हुआ है. यहाँ जो डेटा दिखेगा that will be same. We can see 1940 to 1970. Here also 1940 to 1970. Here you can say population 8,000 to 22,500. Again you can see the population is same. So I am taking a same example, right? So what you have to do is you have to just draw one more table, and there you have to mention increase in population. So increase in population, for that the formula will be same as we have seen in backward. So likewise in first row you will put a dash, but in second row you can put a value by considering, like in 1950 it is 12,000, in 1940 it is 8,000. So what you will do, you will do 12,000 minus 8,000. So this will give you 4,000. I repeat, 12,000 minus 8,000, this will give you 4,000. Now
Further, 17,000 minus 12,000, this will give you 5,000. Further, if you see similarly, 22,500 minus 17,000, this will give you 5,500, which is same as what we have seen in previous slide. So again, total is 14,500, and percentage, and the percentage is your average per decade is 4,833. Now let us convert everything in the percentage form. Okay, so percentage increase. So ये dash है तो हमें इसको तो consider करने की जरूरत नहीं है, right? So let us percentage कितना increase कर रहा है. So we'll put this 4,000. ये जो आपको 4,000 है, divide by the previous population. This population divide by previous population. So 4,000 divided by 8,000 multiplied by 100, you can see it is a 50% rise. Now similarly, this is the value 5,000. Just see the previous one of previous population, so that will be a 12,000. So 5,000 divided by 12,000 multiplied by 100, this will give you 41.7%. Similarly, we'll see for a third one. So 5,500 divided by the previous population, that is 17,500 multiplied by 100, so it will give you 32.4%. So if we take sum up everything, hello. So if you add everything, so this will be 124.1. What we are adding over here, we are adding 50 plus 41.7 plus 32.4. So this will be 124.1. Now what we'll do, we'll take an average. For that, we have to divide by 3. So when we divide by 3, so this will come around 41.37. Okay, so this much percentage is increment there. Okay, this much percentage is increasing. Okay, so let us move further for calculation of 1980, 1990 and 2000. And this will be like, let us take for 1980. So here the formula is the formula is like this, and it is a little bit sum up of this. अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे इस फॉर्मूले को, so ये हो जाएगा P plus PIG multiplied by divided by 100 multiplied by N. So using this formula only, we have converted in this form. So this will be like 22,500 जो आपका previous year का था amount population वो, plus 41.37 is your average percentage, so that we are taking over here, divide by 100 जो हमारे फॉर्मूला में ऑलरेडी दिया हुआ है, and multiply by this P. This is P plus PIG divided by 100, right? So that formula only we are using it. So 41.37 divided by 100 multiplied by P. P is your 22,500. So though if you do this calculation, so this will be 31,808, right? Similarly, we'll go for further for 1990. In that case, now you can see the value of P is changed. Now the value of P will be P 1980. So 31,808 plus the average percentage is 41.37 divided by 100, again with multiply by P, that is 31,808. If you calculate this, this will be around 44,967, right? Similarly, we'll calculate for 2000. For this PN, the P will be 44.967 plus the average rate is 41.37 divided by 100, and yes, again multiply by your population. So this will give you 63.570. Now let us just correlate those both the values, what we have seen prior and what we have seen now. As per previous method, in 1980, the population forecasting is 27,333. But if you go with the geotechnical increase method, you can see the population forecasting is 31,808. If somebody check the difference between both, this is 27 and this is 31, 28, 29, 30, almost near about 3,500 to 4,000 population is increased. So this much deviation is there, right? Similarly, if you go for this 1990,
here you can see it is a 32,166. But if you see with this formula, with this geometric increment, so this is 44,966. Someone want to just check how much it is increased, then you can, what you can do, you can do like this calculation: 44,967 minus 32,166. So again you can see it is near about 12,000. The difference is, in numerically it is a 12,000 difference. It's a huge. So similarly, if you see for 2000, then previously it is 36,900, almost 37,000, but now you can see it's a drastically change, and it is 63,570. So this is a very old method. Arithmetical increase method is very old method. Once the saturation is done in any city, then only you can go with this. But if any new city is of unit, new town is planning, then definitely you have to go through with geometrical increase method. So this is the basic difference. Now let us move further with the incremental increase method. So this method is a modified of arithmetical increase method. It means हमने जो first time जो देखा method उसकी बात कर रहे हैं, and it is suitable for an average size town under normal condition where the growth rate is found to be increasing order, right? While adopting this method, the increase in increment is considered for calculating further population. This will become in all slides. The incremental increase is determined for each decade for the past population, and the average value is added to the present population along with the average rate of increase. I will explain in this table. Don't worry. Hence, population after n decade. यानी आपको अगर आगे के लिए निकालना है तो formula will be like this: Pn is equals to P plus Nk plus N in bracket n plus 1 divided by 2, then bracket close, then A. In some way, some books you can find out in the terms of x and y. I mean, k की जगह पे x होगा, a की जगह पे y होगा. This may be a probability. जब आप books change करोगे, reference book change करोगे, might be notation may be changed. Okay, so no need to worry. But the basic formula is same, where Pn is a population after nth decade, k is the average increase, a is the incremental increase, right? Now, if you see this set of data, so again in first column it is years, then in second column it is population, right? जैसे हमने पहले दो उसमें देखा है, सेम वैसे ही कॉलम में आपका ईयर भी दिया हुआ है, आपका पॉपुलेशन भी दिया है. व्हाट इज चेंजिंग इज इंक्रीज. क्या इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो पहले में तो कोई इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि इंक्रीज करना भी है तो हम लोग को उसके पहले का डेटा का रिक्वायर्ड है. इट मींस कि यू रिक्वायर्ड द डेटा ऑफ 1935, so which is not with us. So let us left that slot as a blank and let us move further. Now what is the increase that you have to see? Then what you have to do, you have to take 44,522 minus 40,185. If you minus this value from this, you will get 4,337. Similarly, you have to go for everything, like a 60,395 minus 44,522. This will give you this value, 15,873. Similarly, for 1975, 75,604, 75,614 minus 60,395. This will give you this value, 15,219. Similarly, you will get 23,272. Similarly, for 1995, 25,344. Similarly, for 2005, you will get the value 34,570, 34,570. Now, this is the incremental value what you are getting here. This is the increase value or incremental value. Now, what you have to do, you have to just sum up all the things. You add everything. 43772, 34570. Now, you will get this total value. Now, what you have to do, you have to take an average. So, how you will take an average? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, you divide by 6. This value divide by 6. So, you will get this much value, 19,769.
What it is, it means that every year we are in general we are saying in every year normally 19,769 souls are increasing every decades. So that's a conclusion like this. But we'll move further and we'll go with this formula. From this only you cannot focus for the future. Okay, for this you will require the incremental increase, how much it is increasing. So again for this will be no use, ये आएगा नहीं आपका. Yes, this will be considered. अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से हम ये वैल्यू नहीं लिख सकते हैं. For that you require this value, so we don't have, that's why we have kept blank. So incremental increase, we have to say incremental increase. So incremental increase will be 15,873 minus 4,337, that will give you 11,536. I repeat, incremental increase value you will get like 15,873 minus 4,337, you will get this value 11,536. Similarly, you have to go for this 1975. So for this, what you will do, 15,219 minus 15,873. So you will get the value in the negation. आपको माइनस में वैल्यू मिलेगा, बिकॉज ये जो आप जिससे माइनस कर रहे हो ये वैल्यू आपकी छोटी है, जिसको माइनस कर रहे हैं वो बड़ा है, तो दैट विल बी अ डिक्रीज minus 654, right? So similarly you will do for this 1985, similarly do for 1995 and 2005, then you will get these respective values, right? What you have to do, you have to just total this everything, प्लस प्लस को ध्यान में रखना है, माइनस माइनस को ध्यान में रखना है, और आप सब उसका सम कर दीजिए. When you sum up everything, this will be like 30,233. Okay, so again take an average. If you take an average, so this will, the value will be 6,047. Now you have the formula like Pn is equals to P plus Nk plus बड़ा bracket n, the small bracket n plus 1 divided by 2, and last में bracket close and then a. So here it is a k and here it is a k. I early inform you that कि somewhere it is x and somewhere it is y. No need to be confused. अगर exam में भी आ गया तो भी confuse होने की जरूरत नहीं है. Okay. So let us, we are having the data till 2005. Now I have to calculate for 2015. For this, what you will require, the formula will be like P1995. P1995 यानी आप लोगे कौन सी वैल्यू, P1995 plus NK plus N plus 1 divided by 2 multiplied by A is equals to, आपका जो लास्ट वैल्यू रहेगा, that you have to consider this one, 15,800 1,50,800 8,800, that you have to be considered over here, plus the formula as you have seen, ये आपका 2 डिकेड की बात कर रहा है, यहाँ पे 1995 करके दिया है, that's why यहाँ पे 2 डिकेड की बात कर रहा है, और उसमें कितना पॉपुलेशन था आपका, सॉरी उसमें आपका इंक्रीज कितना था, योर इंक्रीज इन 19,769 प्लस नाउ अगेन 2 डिकेड्स है and multiply by this n plus 1, 2 plus 1 is equals to 3, divide by 2, so this will be 6047. So if you everything, so you will get 21,600 2,16,479 per capita. Okay, so this is the next method, graphical method. So this is again a simpler one. Simply you, when you have a set of data like आपका पॉपुलेशन दिया है एंड ईयर्स दिया हुआ है, वट एवर डेटा यू हैव उसके बेसिस में आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, एंड देन फर्दर अगर आपको बोला गया कि उसके आगे आपको पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना है, देन यू कैन इजीली डू दैट, जस्ट सिंपली एक्सटेंडिंग दिस ग्राफ. अब सपोज करो कि आपके पास देखो 1941 से लेके आपका 2001 तक का डेटा है. ये जब डेटा था तो हमने देखो ये बनाया है कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन से, सॉलिड लाइन से हमने इसको बनाया है, बट इफ यू हैव टू फोकस फर्दर देन यू कैन सी दिस इज एक्सटेंडिंग लाइक दिस. You can extend this in S shape, डायग्राम.
Okay, so in this method, the population of the last few decades are collectively plotted to a suitable scale on a graph. आपको क्या लगेगा, जैसे 1951 का डेटा है, so somewhere it will be 1951 में कितना है आपका 0.16 लाख अगर पॉपुलेशन होगा तो ये पॉइंट मार्क किया। वैसे 1961 का कुछ आपका कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे 1971 से या 1981 से, ये आपको डेटा दिया होगा, इस डेटा के बेसिस में हमने ये ग्राफ बना दिया। इफ फर्दर दे आस्क व्हाट विल द population forecasting for 2011, then what you have to do, let me tell you like this. If suppose somebody says just calculate for 2011, so what you can do, you can just simply take a line like this and just take one more line like this. So you can see this will give you the population in the terms of lakh. This is 0.4, this is 0.5. Let us assume that this will be 0.42 or 41. So that will be a population in lakhs. So this is the simple one by which you can easily get the values. Somehow if somebody say just based on this graph, just tell me about the population forecasting for 2031. For in that case, what you have to do, you have to just take a straight line, okay, like this, and then you have to make a horizontal line like this. So you can say it is near about 0.5 lakhs. So like this you can have the population forecasting in a graphical method. So this is the next method, a decrease rate of growth method. So if the complete growth of a very old city is plotted, it will be seen that the curve has a S shape. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ग्राफ है, ये आपको देखो आपको लिटिल बिट एस शेप जैसा दिख रहा है। अब just imagine that in 1951 the town is established, or you can say the village is established. So till 2000 you can say till 2021 it is in the increasing order. You can say it is rapidly increasing. It is rapidly increasing. Okay, but we can conclude from this, like after 2021 the city get fully covered by the peoples. It is fully highly dense, so there is no chance for further accommodation. So in that case, what will happen, the population density will get reduced, okay, or it will be slowly it will increase slowly. So what will happen, there will be a kind of saturation. So you can see this is the saturation now in 1941 to in 2021 it is getting increasing, then afterward it is getting saturated, right? So growth S shape which indicate the early growth takes place at an increased rate, later growth is on a decreasing rate, which indicate that the saturation limit is just I have brief in a previous slide. Okay, in this method the average decrease in the percentage increase is worked out and is then subtracted from the latest percentage increase for each successive decade. Let us explain this again. We'll take a same set of data as we have seen in a previous first and second method. So we are having a same data, we are having a same increase in population, we are having a same percentage increase in population, but one more column is added over here, and the column is like a decrease in the percentage increase. I will repeat, decrease in the percentage increase. So let us make first row will be empty, second row will be empty. Now if you see the third row, it is decrease in the percentage increase. So in previous what we are doing, हम इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, what we are doing, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे थे, सामने वाले से बैक साइड वालों को माइनस कर रहे थे, but in this case what you will do, this is see, this is 50%, this is 41.7. so what we are doing, 50 minus 41.7, हमने यहाँ पे order reverse कर दिया, 50 minus 41.7, so that will give you plus 8.3. Similarly what we'll do,
Similarly, 41.7 minus 32.4. So this will give you 9.3. Now just add both the things, both the values, you will get 17.6, and just take an average of this. So divide by 2, then you will get the value 8.8. So this is the data, and this is the decrease in the percentage increase. What the basic difference what we have done, what is the basic difference in both the methods? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यूज को यहाँ से ये वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ से माइनस कर रहे थे, ठीक है। जैसे 1965 में से हमने 1955 के पॉपुलेशन को माइनस किया, बट यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज है, हमने इसको क्या किया, जैसे 1950 में 50% था, 1960 में 41.7 है, तो हमने 1950 में से 1960 का जो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है उसको हमने माइनस किया, डिक्रीज वे में हमने लिया. सो here you are getting an average decrease in the percentage increase, that is 8.8. So let us go with this formula. So we'll see here what will the future population forecasting in 1980. So this will be like 32.4, from where we are getting this value 32.4 minus 8.8, यानी कितना जो स्टेबल हमारा वैल्यू है that is 8.8 हम बोल रहे हैं, तो हमने क्या किया, वो माइनस किया, equals to 23.6. Similarly we are doing for 1990. So here 23.6, क्यों 23.6 लिया, क्योंकि 1980 में हमने ये कैलकुलेट किया है 23.6. So that's why 23.6 minus 8.8. अब ये देखिए डिक्रीमेंटल है, हम यहाँ माइनस करते चल रहे हैं. So 23.6 minus 8.8, so it will be a 14.8. Now further, if you talk about the 2000, so it will be 14.8 minus 8.8 equals to 6. So here we are getting the values. Net percentage increase in population will be 23.6, 14.8 and 6.0. So let us calculate by this percentage increase in population. कैसा होगा आपका, जो आपका पहला फॉर्मूला है वही इसको हम कंसिडर करते हैं, यानी फर्स्ट में जो हमने फॉर्मूला देखा था अर्थमेटिक वाला, उसी का मैं बात कर रहा हूँ. सो पॉपुलेशन इज 22,500, ये वाला जो था आपका, प्लस क्या रेट से बढ़ रहा है, दैट इज 23.6. इसके रेट से वो आपका नेट परसेंटेज इंक्रीज है, उसके हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय जो आपको पुराना जो लास्ट डिकेड का आपका पॉपुलेशन था उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get a 27,810, right? Similarly we'll do for this 27,810, from where we are taking this formula. Just hold on. From where we are taking this value, we are taking this value from this 1980 का जो हमने निकाला है. So 27,810 plus this rate of this net percentage increase in population, that is 14.8 divided by 100 multiply by again the same population will give you 31,926. Similarly, we go for a 2000 again. You will take a P is equals to whatever the PN of 1990. So 31926 plus 6% divided by 100 plus जो भी आपका पॉपुलेशन था वही हमने कैलकुलेट मतलब ऐड किया, and will get a 33,842. So this is like a decrease rate of growth method is calculated. Now this is a graphical comparative method. So the future population can be predicted by plotting the population of the other cities. हम इसमें क्या करते हैं कि हम हमारे सिटी का जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है, हम किसी इंडिया की किसी और कंट्री के साथ में से मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. So we are trying to match matching the factors which are similar to our city now. So what are the factors which are going to be considered for this? Those are geographical proximity, then likeliness of an economic basis, then access to a similar transportation system. Okay, population of the city is expected to grow in a similar manner or to city used for the comparison. Okay, तो हम हमारी सिटी का कंपैरिजन किसी एग्जिस्टिंग सिटी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग अगर इसके साथ ऐसा अगर ये पैरामीटर्स हमारे मैच करते हैं तो इतना पॉपुलेशन उसके साथ से जा सकता है, लाइक दिस.
So again, you can see this is a graphical method only, where in x-axis you can see the years is present, whereas in y-axis it is a population is present. Whatever it may be, 30 multiplied by 10 power 3, it means 30,000, like this. Okay, so 35,000, 45,000, like 75,000. So you can see for city A, this is the graph which is compared, which we are comparing with the city C and city B. You can see this city A is comparing with city B and city C, and further if you see this dotted line, so this is this is a proposed extension of city A. यानी हम इन दो सिटी के बेसिस में हम बताएंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो कुछ ऐसा इंक्रीज करेगा, right? On the basis of two these cities we will talking about our city, ये extension of that. मतलब suppose करो कि 1950 में हमारा अगर population 30,000 था, so what we are trying to say in 1990 it will be near about 54,000. Based on this, let us take an मतलब I will tell you like this. I will repeat. Suppose that in 1950 the population is 30,000. If I am talking about 1990 में कितना हो जाना चाहिए था? So this will be like you just go through this red pen. You just draw a straight line like this, and then again draw a horizontal line like this. So near about you can see it will be 54,000. Just ignore this curve. ये मैं straight line draw करने की कोशिश कर रहा था. This is the straight line. So this will be telling you about the 54,000, right? So this will so in this way it works. So next method is a master plan method or a zoning method. This is quite interesting. Like the development of the town and cities is not allowed in a haphazard way. कोई भी टाउन प्लानिंग जब हम करते हैं तो वो हेपेसाइड तरीके से नहीं होना चाहिए. हेपेसाइड तरीका यानी कि आप देखो जब हम पाइप सिस्टम में भी जाते हैं या रोड डिजाइनिंग में भी जाते हैं तो क्या हो जाता है कि आपका मतलब डेड एंड आ जाता है. सो व्हेनेवर दैट यू विल गेट अ डेड एंड इट मींस दैट इट इज अ हेपेसाइड मैनर. सो जब भी प्लानिंग होगा तो वो एक प्रॉपर तरीके से रेडियल फॉर्म में होना चाहिए, सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्रिडिंग एंड अर्बन प्लानिंग. So हमें उसके अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए. Okay, for the development of the towns and cities, their master plan are prepared. कोई भी टाउन या प्लान सिटी जब भी प्लान होता है तो उसका एक मास्टर प्लान हमेशा रेडी किया जाता है. The city is divided into various zones such as a commercial center, industrial area, residential area, school, colleges और institutional area, right? तो इसको हम क्या करेंगे, different zones में हम divide कर देते हैं. ये मैं बता रहा हूँ जब भी हम लोग अर्बन प्लानिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग वेरियस जोन्स को डिवाइड करते हैं. और यू कैन सी देयर आर वेरियस सिटीज जस्ट लाइक if I talk about Nagpur because I'm from Nagpur, so I know in very well manner, that's why I'm telling you कि नागपुर में भी क्या है, it is like a very planned city जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल जोन अलग होगा, कमर्शियल जोन आपका अलग होगा, इंडस्ट्रियल जोन हमारा अलग होता है. There are separate zone which is known as a silent zone for the hospitals and temples like this. So there are various zones we have to demark in the urban planning. Okay, the future expansion of the city is strictly regulated by various bylaws of a corporation and other local body according to the master plan. अब वो जो मास्टर प्लान है उसमें हमने फिक्स कर दिया कि हमारे इतने ही हाउसेज होने चाहिए, हमारे इतने ही ब्लॉक्स बनने चाहिए, हमारे इतने ही कॉलोनी बनना चाहिए. सो इट इज काइंड ऑफ फिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन. वहां पे हमने ऑलरेडी हमारे पॉपुलेशन को हमने फिक्स कर दिया है. ओके, द मास्टर प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी फॉर 25 to 30 years. हम कभी भी डिजाइन करेंगे मतलब न्यू कभी भी प्लानिंग हम करते हैं, सो वी आर टॉकिंग फॉर द 25 to 30 years. देन बाद में उसका एक्सपेंशन करेंगे. The population density for a various zone of the town to be developed are also fixed. मैंने जैसे ही कहा कि population उसमें फिक्स कर दिया है, population density आपको फिक्स कर दिया है, उसी को हम प्लान कहते हैं. Now when the population of a particular zone is fixed, it is very easy to design the water supply scheme for the particular zone.
अब ये इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे चोर, मतलब वहाँ पे थेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे लॉसेस का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ डेड एंड्स नहीं है, मेंटेनेंस का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज वो प्लानिंग में है. द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ वाटर वर्क इज ऑल्सो designed on the basis of the master plan. Okay, so let us go with this data. Hello. कैसे? हाँ, हमने रिसेट नहीं किया, एक आज तो किया नहीं रिसेट. अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से बस 5 मिनट खत्म. हाँ, I'm sorry guys, so let us talk about this data. What I'm trying to show here is, here I have mentioned like a type of area. This is a type of area, and this is the population density in number of person per hectare. यानी एक हेक्टेयर में कितने पर्सन होते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है. So let us talk about the residential area. When we say residential areas, so we are bifurcating this in 4 parts, like large lots of single family residence, then small lots of single family residence, then multiple family quarters and tenant houses. So ये हमने various classifications हो गए as per town planning. So उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा रहा large lot of single family residence अगर रहता है, so you will require a 10 to 40 population density, number of person per hectare. I repeat, I'm sorry. नंबर ऑफ पर्सन पर हेक्टर, यानी एक हेक्टर में आप 10 से 40 लोगों को इससे ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते हो. दिस इज फिक्स्ड बाय द टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट. इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल लॉट्स ऑफ ए सिंगल फैमिली रेसिडेंस, देन मैक्सिमम मिनिमम 40 and maximum 90, this much you can accommodate there. If we talk about a multiple family quarters, so it is a 90 to 250, and then tenant houses, then 250 to 3,500. Let us talk about a commercial area. So you will require a 40 to 75 number of person per hectares. Industrial area 10 to 40 per person per hectares. Then park and playground, etc. 25 to 125 per person per hectares. Now next is apportionment or a ratio method. In this method, the census population record is expressed as a percentage of population of the whole country. Allotment is provided over here. हम यहाँ पे allot कर देते हैं सीधा सीधा, जैसे हम यहाँ पे allot कर रहे हैं, similar way में हम यहाँ पे भी allot करते हैं. The population of the city under consideration and the country population for the last 4 to 5 decades are collected from the census department, as we are doing in the last method as well, जहाँ पे हमने पिछले 4-5 साल का डेटा इकट्ठा किया. On the basis only आप यहाँ पे वैसे ही काम करोगे. The ratio of a town under consideration to a national population is calculated for these decades. Now a graph is plotted between this ratio and the time. ये आपका देखो population ratio versus time में ये आपका ग्राफ बनेगा. The extension of this graph will give the ratio corresponding to a future years for which the forecasting of the population is to be done. Okay, so let me tell you कि अगर ये आपका अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ योर ग्राफ इज लाइक दिस, ओके, सो एक साइड में आपका रेशियो दिया रहेगा, सॉरी लेट अस से यहाँ टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका रेशियो कंसिडर कर लेते हैं हम लोग. सो हम ये कह रहे हैं कि this graph will be provided by the data from taking from the last 5 census. Of that हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे by looking towards the nature of the graph. By looking towards the nature of the graph, हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे like this. So in this way आप उसका population forecasting कर सकते हो. ठीक है. Then next is logistic curve method. This is also widely used nowadays in town planning. This method is used when the growth rate of a population due to birth, death,
and a migration takes place under a normal situations, and it is not subjected to any extraordinary changes like epidemic, war, earthquake, or any natural disaster. The population follow the growth curve characteristics of a living thing within a limited space and an economic opportunity. मतलब इसमें कोई खास ऐसा चेंजेस नहीं हो गया जैसे अपना कोविड हो गया, कोविड के कारण जैसे लार्ज अमाउंट में डेथ हो जा रही है, जैसे स्वाइन फ्लू हुआ या जैसे आपका प्लेग हुआ, तो ये सारे जो डिजास्टर्स होते हैं तो वो इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है. If the population of the city is plotted with the respect to time, the curve so obtained under normal condition is look like a S shape. अगर ये हम वापस से हम ईयर वर्सेस पॉपुलेशन का ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये दोबारा से आपका जो ग्राफ है, दिस विल बी लाइक अ एस शेप कर्व. दिस इज अ एस शेप कर्व एंड लेट मी टेल यू दिस इज क्वाइट नेचुरल, ये ऐसे ही होना चाहिए. दिस इज वेरी आइडियल ग्राफ इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर द सिटी, किसी भी एक सिटी का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे हो रहा है तो उसका जो ग्राफ बनेगा इट शुड बी लाइक दिस, क्योंकि जहाँ पे ऑक्यूपाई फर्दर ऑक्यूपाई करने के लिए जगह नहीं रहेगा, सो दैट विल बी अ सैचुरेटेड लेवल. तो ये आपको देखोगे सैचुरेटेड, कोई खास चेंजेस नहीं है. फ्रॉम दिस टू फ्रॉम दिस यू कैन सी देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंक्रीमेंट हैपनिंग ओवर हियर, बट उसके बाद में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है लेकिन इट इज क्वाइट स्टेबल. Okay, so you can use this formula for the calculation of the population, that is P is equals to PS divided by 1 plus M log to the base E minus 1 and NT. Okay, you can use those formula, and this is the this is again whereas this, let us talk about this PS. So PS क्या चीज है? Again, you have to calculate the PS. For PS calculation, you will require a P0, P1, and a P2. If you see this in example, the value are given like P0 is 80,000, P1 is 2,50,000, P2 is 4,80,000. ये data दिया हुआ है. Again, you will require few more points. Like T0 की भी जरूरत पड़ेगी. So T0, T1, T2. T0 for P0 T0 stands for P0, मतलब इसलिए यूज किया गया respectively. T1 is for P1 and T2 is for P2. Like from this formula you will use and calculate the value of PS, and the M is known as slope and N is known as decades. So individually you have to calculate these things. Okay. So whenever we'll take a numerical, I will let you know and how to calculate these things. And the short question asked from this particular topic, population forecasting, short 100% question arises for minimum 10 marks. Okay. So in next lectures we'll go for the numericals. Okay. So this is all for today class. So this is done from my side. If anybody wants to ask any